The topic we are going to discuss about is aldehydes and ketones, and the subtopic is nomenclature. So in aldehydes, the carbonyl group is bonded to at least one hydrogen atom, so it occurs at the end of the chain. Here we have the carbonyl group. अगर इसके एक साइड पे हाइड्रोजन एटम अटैच है, it would be aldehyde. और एल्डिहाइड के साथ क्योंकि हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, तो आप इसे चेन के मिड में फिट नहीं कर सकते, इसलिए कि हमेशा एट द एंड ऑफ द चेन ही प्रेजेंट होगा. If we talk about its common names, they are obtained from names of carboxylic acids containing the same number of carbon atoms. आप carboxylic acid में मुझे IC को replace कर देंगे with the word aldehyde. और अगर if you have to number, तो आप जो कार्बोनल कार्बन का जो कार्बन है उसको छोड़ के नेक्स्ट से आप उसको अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा नंबर कर सकते हैं. Here we have some examples. First one is formaldehyde. So formic acid से IC को आप replace कर देंगे with the word aldehyde क्योंकि इसमें सिर्फ एक carbon atom है. That's why we are naming it as formaldehyde. When we have two carbon atoms, it would be acetaldehyde. For 3, it would be propanaldehyde, and for 4, it would be butyranaldehyde. Next are the IUPAC names. The IUPAC names are derived from the names of the alkanes with the same number of carbon atom. जबकि हम common names को carboxylic acid से derive करें. यहाँ पे हम E को replace कर देंगे with AN. Here we have some examples like if we have one carbon atom, it would be methanol. For 2, it would be ethanol. For 3, it would be propanol. यहाँ पे हमारे पास एक substituent भी मौजूद है, it is chlorine. So it would be 2-chlorobutanol. And यहाँ पे C6H5 is बेंज एल्डिहाइड क्योंकि ये यहाँ पे हमने बेंजीन से जो है वो हाइड्रोजन एक सब्स्टिट्यूट करके उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर दिया. सो इट्स एन एक्सेप्शन. Next we have the ketones. In ketones, the carbonyl group is bonded to two carbon atoms, so it occurs within a chain. Carbonyl group के दोनों sides पे carbon atoms हैं, so they would be ketones या आप alkyl groups भी कह सकते हैं. So क्योंकि दोनों साइड पे कार्बन है तो ये चेन के दरमियान में भी फिट हो सकता है. So for their common names, they are obtained by separately writing the names of the alkyl groups attached to the carbonyl carbon. The word ketone is added as a separate word. Let's explain this with the help of examples. Here we have some examples, that is dimethyl ketone. यहाँ पे जो alkyl group है, they are methyl. क्योंकि दो दफा है तो it would be dimethyl. So alkyl groups हमने separate लिखे और ketone जो है वो हमने एक separate word add कर दिया. यहाँ पे we have at one side ethyl group, on the other methyl group. क्योंकि ethyl alphabetically E पहले आता है तो ethyl पहले लिखेंगे, then methyl, और ketone को हमने separately add कर दिया. तो यहाँ पे ketones के common names के लिए हम alkyl groups को separate लिखेंगे जो कार्बन की दोनों साइड पे प्रेजेंट है, और कीटोन का वर्ड जो है वो सेपरेटली ऐड कर देंगे उसके साथ. So next are the IUPAC names. The IUPAC names of ketones are derived from the alkanes having the same number of carbon atoms. यहाँ पे हम E को replace कर देंगे with the suffix 1. Here we have examples. It is 2-propan. क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं तो उसके लिए हम प्रोपेन यूज करते हैं, वहां पे हमने E को रिप्लेस कर दिया with 1. So यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन एटम्स थे तो it would be 2-butan क्योंकि जो कार्बन है that is at position number 2. So यहाँ पे जो है it is acetophenone. यहाँ पे जो 2 कार्बन एटम्स हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करें acid, और यहाँ पे जो C6H5 है that is phenone. So यहाँ पे भी we have an exception, that is acetophenone. Let's discuss a question. Which of the following is an unsymmetrical ketone? And following are the options. Unsymmetrical ketone वो ketone होती है जिसमें कार्बन कार्बन के दोनों साइड्स पे जो कार्बन की तादाद है वो अनइक्वल, यानी कि अगर एक साइड पे 2 कार्बन प्रेजेंट है तो दूसरी साइड पे 3 कार्बन प्रेजेंट. So the correct option would be the last one क्योंकि एक साइड पे we have 2 carbon atoms जबकि दूसरी साइड पे we have 3 carbon atoms. So this was all about
the nomenclature of aldehydes and ketones. I hope you have understood it well, and thank you so much.